Today's topic of the message is seven trumpet. 7 तुरतुरियां। Praise the Lord. Hallelujah. भावार्थी दो ही कुशल कायची खबर. Believers, this is a thing of happiness. विश्वासियों खुशी की बात है। पवित्र पुस्तकाचे प्रमाणे According to the Holy Bible, बाइबल के अनुसार 7 ट्रम्पेटे वाजवायचेले. the seven trumpet will be played. 7 तुरतुरियां बजाएंगे। एका दिसाक 1 2 3 4 5 6 आवाजे वरची कोयतला एकाच बरोबर पण केरीत भाषेन 7वे वयर 7वी ट्रम्पेट आजे वयर हांव उलयता आयज. 1, 2, 3 till 6. One day Pastor will speak about it, but today Pastor is speaking about seven trumpet. मैं पास्टर 1 से 6 तक एक दिन सिखाएंगे आपको, मगर आज जो है 7वें के बारे में सिखाएंगे आपको। 7th trumpet will sound when we are in the spirit, and if we are not in the spirit and do not do the work of the Lord, the 7th trumpet will not be blown. It is better for us to live in the spirit and to do the work of the Lord. Hallelujah. 7th trumpet The seventh trumpet 7वां तुरतुरी वाजतेली will be blown, वो बजेगा, आणि वाजोंकूच जाय. and it must be blown. वो बजना भी है। हालेलुया. आमका लागून ती वाजतेली. It will be blown for us. वो हमारे लिए बजेगा। आमच्या हातान हा संसार कवर करचो. It is in our hands to destroy or to come to end of the world. ये दुनिया को नाश करना ये हमारे हाथ में है। ऐकतल्यांदो कान उतके धरून ऐकात. The one who listens, listen carefully. सुनने वालों अपना कान खुला करके सुनो। हांवें कितें सांगलां? What did Pastor say? पास्टर ने क्या कहा है? आमच्या हातान हा संसार कवर करचें. We have the authority to put the world into an end. दुनिया को खत्म करना ये हमारे हाथ में है। तुम्ही मुडोंक बरो पास्टर तू कितें उलयता रे? सगळी पदवी ह्या देवा लागीं. You may say, Pastor, what are you saying? All the power, God has it. शायद आप कहें कि पास्टर आप क्या कह रहे हैं? सब सामर्थ परमेश्वर के हाथ में है। ताकाच लागून बरी भाशेन ऐकत आनी हांव स्क्रिप्चर दिता तो बरोयात. And that is why listen carefully, and whatever the scripture pastor is giving, write it down. इसीलिए ध्यान से सुनो, जो पास्टर वचन देते हैं उसे लिख कर रख लो। जेन्ना आमी देवाच्या आत्म्यान आहा, When we are in the spirit of God, जब हम परमेश्वर के आत्मा में हैं, आमी देवाचे उतर परगट्टेले. then we will proclaim the word of God. हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे। तेन्ना And then, तब आमकां लागून for us, हमारे लिए 7वी ट्रम्पेट वाजतेली. the seventh trumpet will be blown. 7वीं तुरतुरी बजेगी, एकदम गरजेचें. And this is very important. और ये बहुत जरूरी है। बावरजांदो, Believers, विश्वासियों, तुम्ही सगळे तयार आसूंक जाय. all of you all must be ready. आप सब तैयार रहना है। 7वी ट्रम्पेट जावन आसा कुशल कायची खबर भावार्थ्यांक. The seventh trumpet is a thing of happiness for believers. 7वीं तुरतुरी विश्वासियों को खुशी की बात है। बिरांती खबर हो संसार म्हणजे भावार्थ्यांक डिस्ट्रॉय करता दुसरो मनीस ते मनशांक ते सैतानाक. It is a fearful thing for the one who is destroying the believers, that is the devil. और डर की बात उनको है जो विश्वासियों को नाश करते हैं। एकदम बरें. It is very good और ये बहुत ही अच्छा है। आमी देवाच्या वतिम्यान जिवंक. for us to live in the spirit of the Lord. हम परमेश्वर के आत्मा में जिए। जेन्ना तूं वतिम्यान जियेता, So when you live in spirit, जब आप आत्मा में जीते हैं, तूं दो ट्रुथ परगट करता. you proclaim the truth. आप द ट्रुथ प्रचार करते हैं। जे क्रिस्ताचे उतर तुझ्या जिवितांत घडोवन हाडटा. You bring the word of Jesus Christ in your life. आप यीशु मसीह के वचन को आपके जीवन में पूरा करते हैं। स्वर्गीचे बापाक तू खुशी करता. And you do the will of the Father. आप स्वर्गीय पिता की खुशी करते हैं। सैतानाचे काम काबार तू करता. And you destroy the work of the devil. आप शैतान के कामों को नाश करते हैं। इतलेंच न्हय, Not only this, इतना ही नहीं, सैतानाक जातातले बेगी इफेनाक उडोवंक तू तयार करता. at the most you make the devil ready to throw him into hell. आप तैयार करते हैं जितना जल्दी हो सके शैतान को नरक में फेंकने के लिए। Hallelujah. Revelation 11 chapter verse 15 to 19. Revelation 11 chapter verse 15 to 19. ते लुकारार आमकां वशे मेवता सांगता. वशे मेवता. ऐसे वहां पर ऐसे मिलता है। We receive in this way. Death will judge. मेल्ल्या मनशांक जोटी जातली. The dead will be judged. मुर्दों का न्याय होगा। We will receive reward. आमी
इनाम घेतलेले बावडतेंदो And believers, that is, we will receive a reward. विश्वासी हम इनाम पाएंगे। कसले रिवॉर्ड What reward? कौन सा इनाम? जिविताचो क्राउन मुकुट It is a crown of life. जीवन का मुकुट। हालेलुया वो रिवॉर्ड आमकां मेवतलो And this is the reward which we will receive. ये इनाम हमें मिलेगा। जेजूच्या जेवणाच्या मेजार आमी जेवतले We will dine in the table of Jesus. मसीह के साथ हम भोजन करेंगे। जेजू सांगता त्रोनार बरोवन आमी अधिकार चलोयतले Along with Jesus, we will sit upon thrones and we will rule. मसीह के साथ सिंहासन पर बैठकर हम राज्य चलाएंगे। ही कुशारकायची खबर न्हय Is it not a thing of happiness? ये खुशी की बात है ना? जाता तितले बेगी मेवंक नाका आमकां As soon as possible, we must receive this. जितना जल्दी हो सके ये हमें मिलना चाहिए ना। थोड्यांक दूख जालें कितें हांव बंगलो काडचो हांव गाडी घेवचो हांव काजार जावचो म्हाका हें जावचें दूख जालें आरे म्हजे बाब म्हणितो तूं भांगराच्या घरांत जियेतलो देवाच्या मुखार Some people felt the pain because they had a future. They have thought so much. But pastor says that you will live in a mansion made of gold. कुछ लोगों को दुख हुआ क्योंकि उनको घर निकालना है, शादी करना है, ये करना है, वो करना है। मगर मेरे प्यारे भाई बहनों, पास्टर कह रहे हैं कि आप स्वर्ग में सोने के घर में रहोगे। ओके मुखार द किंगडम ऑफ द वर्ल्ड विल बी आवर किंगडम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट संसाराची राजवटी जातली आमचे जोनिया क्रिस्ताची राजवटी The kingdom of the world will be the kingdom of Lord Jesus Christ. संसार का राज्य हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा। द इवल पीपल विल डिस्ट्रॉय मेळे मनीस कोबारसान वयतले The evil people will be destroyed. शैतान के इंसान नाश हो जाएंगे। आता आमी इंग्लिशीन आनी कोंकणी वाचूया वाच सिस्टर बरे भाशेन बरोवन घेयात Revelation chapter 11, verse 15 to 19. 15. The seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven, which said, The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and his Christ, आमेन and he will reign forever and ever. आमेन 16. And the 24 elders who were seated on their throne before God fell on their faces and worshipped God, दे मस्ट saying, 17. We give thanks to you, Lord God Almighty, the one who is and who was, because you have taken your great power and have begun to reign. आमेन 18. The nations were angry and your wrath has come. नेशन एक शब्द नेशन वे एंग्री नेशन कोण मेळे मनीस नॉट अ कंट्री अर्थ नेशन रिफर केला मनशांक वे एंग्री कितें एंग्री रागार बावट्याचेर आमी देवाचे Amen. हालेलुया Praise the Lord. मुखार या The nations were angry on believers. Why? We are the children of God. राष्ट्र और देश यानी विश्वासियों के ऊपर गुस्सा है क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। The nations were angry and your wrath has come. The time has come for judging the dead. Hallelujah. And for rewarding your servants, the prophets, आमेन and your saints, and those who reverence your name, both small and great, and for destroying those who destroy the earth. 19. आयकला Listen. जेजू एका लुगार अशें उलयता म्हजे वयर कोणाचो तूं भावट आलोयशी त्या मनशांक सांगात गोळ्याक कितें मान सांगला Milestone. भिरान दिसता तुमचे भितर सीन आहा कितें खोबरो केला कितें एनोडिंगाचेर मागीर कितें भियेता बुडोवन म्हण सांगला या पळय वत उतर वत डिस्ट्रॉय कोत्ता वत म्हण कितें मनीस आपल्याक आर्गां दिवच्या मनशांक बावडताना हालोयता डिस्ट्रॉय कोत्तलो Amen. हालेलुया जेजू क्रिस्ताक आर्गां मुखार वच 19. Then God's temple in heaven was opened, and within his temple was seen the ark of his covenant. And there came flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, an earthquake, and a great hailstorm. आमेन Amen. जेजू क्रिस्ताक आर्गां ट्रम्पेट वाजोवंकूच जाय The trumpet must be blown. बावट तुरतुरी बजना ही है। बावट्याच्या हातान आहा तें
It is in the hands of believers. और वो है विश्वासियों के हाथ में। ऐकात हांव कसो उलयता आनी कितें उलयता सगळें बरे भशेन आयकात आनी एक एक उतर बरोवन घेयात। कोंगानी वाच बाय तूं रोखडे उलय मरे हिंदीन Złamak प्रकाश सोनी प्रॉब्लेम करता Aveswar 11 बोल 15 ते 19 15 उपरांत सातव्या देवदूतान आपली तुतुरी वाजयली जेजू क्रिस्ता कारगा आनी स्वर्गार व्हडल्यान अशी बोब मारताले ताळे गाजले सर्वेस संवसाराची राजवटकी चलोवची पदवी आतां आमच्या सर्वेस्पराची आनी ताच्या क्रिस्ताची जाली आनी तो याद रे खुशाल जावात सोयतानाच्या ताब्यान आसलो संसार तो जेजू क्रिस्ताच्या ताब्यान पडला The world which was in the hand of the devil, now it fell in the hand of Jesus. जो संसार शैतान के हाथ में था वो अभी यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया आनी सासनाच्या सासनाक तो राज चलयतलो जेजू क्रिस्ता कारगा 16 तेन्ना देवा मुखार आपल्या सोदराचेर बसून आसात ते 24 जाणटे साश्टांगी पडले वडोकूच जाय आनी देवाक तांणी बोजलो बुजोकूच जाय ह्या उतरांनी सर्वेस्परा सोर पदवेदारा देवा तूं आसाय आनी तूं आसलोय आमेन तुजी वोट पदवी तुज्या हातांत तुवें घेतलाय देखून आमेन आनी तूं रात चलोवंक लागलाय देखून तुका आमी दिन वाचता हालेलुया जेजू क्रिस्ता कारगा 18 राष्ट्रां चालवली तुज्या रागाची शिरांत येवची आनी मेलेल्यांची जोडटी करची ही गोडी तुज्या सेवका प्रवाद्यांक तुज्या भक्तांक आनी तुज्या नांवाक मान दितल्यांक ल्हानांक तशें व्हडल्यांक इनाम दिवचो वेळ हो इनाम दिवचो वेळ आमेन भावतालो खुशाल जावात Believers, be happy. It is a time to give you a reward. विश्वासियों खुश हो जाओ क्योंकि ये समय है इनाम देने का आपको। संसार पाड करतात तांकांच पाड करचो वेळ हो 19 सजमो केला ताचे मिनींग आमी उलयला पत्तून उलयना कान हालले आयकोचें स्वर्गार देवाचो घाबारो उक्तो जालो आनी तातून कोराराची पेट दिश्टी पडली तेन्ना जोगजोगलांनी जोगजोगली गोडगोड्यांचो गोणगोण गाजलो आमेन दोर्नखांप जाली कोरव्यांचो पावस पडलो आमेन सजमो केला Do you understand? आई बात समझ में? हांवें उलयलां इंग्लिशीन कोंकणीन वाचलां सजमो केलां घरा वचोन पवित्र आत्म्याचो आदार घेयात आनी वाचात हालेलुया घर में जाकर पवित्र आत्मा का सहायता लो और इसे पढ़ो वचन को। Pastor just now spoke and we just read it in 2 languages. So go home, take the help of the Holy Spirit and read it. सातवी ट्रम्पेट वाजोंक कोणाच्या हातान आहा For the 7th trumpet to be blown, in whose hand is it? आमच्या भावार्थ्याच्या हातान आहा It is in our hands, that is the believers. वो हमारे हाथ में है विश्वासियों के। ट्रम्पेट आहा आयज बडयताय The trumpet is with the angels. तुरतुरी सरदूत के हाथ में है। जेन्नापासून आमी काम करिना ह्या लुगारार ते वाजचे ना त्या लुगारार Until and unless we do not work in this place, it won't be blown at that place. जब तक हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे तब तक वहाँ पर वो नहीं बजेगा। हालेलुया जेजू क्रिस्ता कारगा नाजो जेजू क्रिस्ता कारगा जेजून एक काम का शिकोवन दिल्या पीक जायत ह्या वावराडी कमी हा वय हो ना आहा आयकलां ओके जेजून कितें सांगलां तें आमी उलय कोणाक सांगलां तें उलय मॅथ्यू 28 चॅप्टर वर्स 18 and 19 मॅथ्यू 28 chapter verse 18 and 19 वाचूया Matthew chapter 28 verse 18 and 19 18 Then Jesus came to them and said All authority in heaven and on earth has been given to me आमेन आमेन ऐका एक आमी सुरवातेक कितें उला संसाची राजवटी जेजूच्या हातान पडली वाचला First, we have read that all the kingdom of the world has already fell in the hands of Jesus. पहले हमने पढ़ा है पूरे संसार के राज्य की सामत यीशु मसीह के हाथ में गिरा है। आमच्या व्हडलो देंवचार न्हय आमी देंवचारकी व्हडले Amen The devil is not greater than us, but we are greater than him. हमसे बढ़कर शैतान नहीं है, हम शैतान से भी बढ़कर है। आज जेजू आपल्या तोंडान उच्चारणी कोत्ता ह्या लुगारार Now Jesus confesses from his own mouth over here. और यहाँ पर यीशु मसीह अपने ही मुंह से अंगीकार करते हैं। कितें उच्चारणी कोत्ता What did he say? क्या वो कहता है? स्वर्गार In heaven, स्वर्ग
संसारान in earth, संसार सगली पदवी म्हाका आहा. Amen. all the power, I have it. सब सामर्थ मुझे है. जेजू म्हणटा. Jesus says these words. यीशु कहते हैं ये वचन. आती पदवी खंय आहा ती पळोवया आमी कितें सांगता मुखार. ये सामर्थ कहाँ है ये हम देखेंगे. Now let us see where this power is. Verse 19. Therefore, Therefore, go and make Go. disciples. hey, you go. Yes. What? अरे बाहर गंदा what? It says, go believers. और कहता है विश्वासियों की जाओ. मायकल घे ही चावी गाडयेची. What? दिल्या. Amen. जेजू लागीं पदवी आदी आमकां दिल्या. What? Yes, amen. The power which Jesus has, it has already been given to us and it has told to us to go. और जो मसीह के पास सामर्थ थी वो सामर्थ हमें दिया है और कहा है कि जाओ. What? Go. जाओ. कितें करूंक? To do what? क्या करने के लिए. तें गरजेचें. And that is important. और वो बहुत जरूरी है. तें गरजेचें. That is very important. और वो बहुत जरूरी है. सुटावे करून सांग बाई. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. ऐकात. Make disciple for all nation. Nation म्हळ्यार तुम्ही संवसाराचे नदरेन नेशन कंट्री डिसायपल करूंक जायना. मनशाक डिसायपल करूंक जाता. होय ना? Amen. म्हणजे हे लोक दाखयता नेशन रिप्रेझेंट मॅन ओ ह्युमन बीइंग. होय हो ना? समज येला? Over here, the nation means man. It is represented as man. यहाँ पर राष्ट्र यानी इंसान को दर्शाया गया है. तांकां म्हजे शिश करात. Make them my disciples. उनको मेरा शिष्य करो. कोणाचे काम हे? Whose work is this? ये किसका काम है. भावार्थानो तुमचे काम. Believers, it is your work. ये विश्वासी आपका काम है. जोण एकल्याचे काम. It is the work of each one of us. हर एक इंसान का काम है. एकदम गरजेचे. And it is very important. और ये बहुत जरूरी है. कितें तुका दिला? Because it is given to you क्योंकि आपको दिया ते है. तुवें उजार करूंक जाय. that you must use it. वो आप इस्तेमाल करना ही ते है. तुझे काम. It is your work. ये आपका काम है. तुझे काम. It is your work. आपका काम है. देव कोत्तलो वशा ना दे. It is not that God will do it, वहां पर ये नहीं है कि परमेश्वर करेगा. तू कोत्तलोय. but you will do it. आप करोगे. कितें जेजून दिला पदवी. Because Jesus has given you the power. क्योंकि यीशु ने आपको सामर्थ दी है. हालेलुया. हे करूंक To do this, ये करने के लिए जे क्रिस्ताचो आत्मा आसूंक जाय तुजे भितर. the spirit of Jesus must be in you. यीशु का आत्मा आपके अंदर होना चाहिए. आनी वो आत्मा आसलेलो मनीस And the person who has this spirit, और ये आत्मा जिस इंसान के अंदर है वो इंसान हे काम कोत्ता. and he does this work. एक काम करता है. हालेलुया. जेस क्रिस्ता कारगा. प्रेज द लॉर्ड. आयकोंगे ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोंगा निवास भाई. माथेवाचे शुभ वर्तमान आवेसवोर 28 बोल 18 आणि 19. 18 जेजून फुडें सोरून म्हळें, स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगळो अधिकार दिला. नाज जेस क्रिस्ता कारगा. 19 म्हणटोच वचून सगळ्या राष्ट्रांक म्हजे शीस करात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां स्नान दियात. 20 आनी हांवें तुमकां दिल्या 18 and 19. पयला Have you all seen देखा पदवी. the power? सामर्थ. तातून भितर हांव एक रेवलेशन म्हणजे देवुसराचे भितर आले मनशाक तुम्ही भायर हाडूंक जाता. There's a revelation. The person who are in the capture of devil, you can go and bring them back. उसके अंदर एक प्रकटीकरण है. आप जो शैतान के अंदर है उस इंसान को बाहर निकाल सकते हैं. ब्रदर ये कारण हांव रावना. ये कारण देवुसरा आमकां दी घर आमी रावता. हालेलुया. You say, brother, I will not live in this house. There are all evil spirits present in this house. और आप कहते हैं कि ब्रदर नहीं, इस घर में शैतान है, इस घर में हम नहीं रहते हैं. पास्टर कह रहे हैं कि वो पास्टर को घर दो, पास्टर रहेंगे. ये म्हजे पाठान देवुसरा हा. There is a devil in my place. और उस जगह पर यानी शैतान है. ताका सांग जेस क्रिस्तान तुमकां पदवी दिल्या. And that is why Jesus has given you the power. इसीलिए यीशु मसीह ने हमें सामर्थ दी है. तू उबो राव त्या लुगारार. You stand in that place आप उस जगह पर खड़े हो जाओ. आनी तू धांवडाय देवुसराक जेस क्रिस्ताच्या नांवान. and you cast out that devil in the name of Jesus. और आप भगाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान को. एकदम सोपे. And this is very easy. और ये बहुत आसान है. एकदम सोपे. It's very easy. ये बहुत आसान है. कित्याक? Do you know why? क्यों? जे ख्रिस्त आत्म्याचे रूपान तुमच्या भितर छे येता.
Because Jesus Christ in the form of spirit dwells in you. क्योंकि यीशु मसीह आत्मा के रूप में आपके अंदर जी रहा है। आम्ही किती सांगलं What did pastor say? पास्टर ने क्या कहा है? जेव्हापासून आम्ही देवाच्या आत्म्यांना Until and unless we are not in the spirit, जब तक हम परमेश्वर के आत्मा में नहीं हैं, देवाचे काम करून आमच्या लागी जाऊचे ना we won't be able to do the work of God. परमेश्वर का काम हम नहीं कर आणि पाएंगे। आम्ही देवाचे काम करी ना And the moment when we don't do the work of God, और हम परमेश्वर का काम नहीं करेंगे तो सातवी ट्रम्पेट वाजची ना the seventh trumpet will not be blown. सातवीं तुरतुरी नहीं बजेगी। आणि सातवी ट्रम्पेट वाजची ना And if the seventh trumpet is not blown, सातवीं तुरतुरी नहीं बजेगी, सोयतानी फेनान पडचो ना the devil will not be put into hell. शैतान नरक में नहीं गिरेगा। सोयतानी फेनान पडो कुछ जाई The devil must fall into hell. शैतान नरक में गिरना ही है। सातवी ट्रम्पेट वाजो कुछ जाई The seventh trumpet must be blown. सातवीं तुरतुरी बजना ही है। त्यांना And then, तब संसाराचेर on this world, संसार के ऊपर कबार जावपाचे निसंतन डिस्ट्रॅक्शन येतले a destruction will come upon this world. परमेश्वर की नाशता यानी डिस्ट्रैक्शन उतरेगी। ताकाच लागून हांव तुमकां सुरवातेक हांवें सांगले And that is why pastor spoke to you in the beginning. इसीलिए पास्टर ने पहले ही कहा कितले गरजेचे देवाचे उतर The word of God is very important. कितना जरूरी है परमेश्वर का वचन। जेजू जेजू म्हणला तू स्वर्गार वयचो ना By saying Jesus and Jesus will not go to heaven. आप यीशु यीशु कहने से स्वर्ग में नहीं जाओगे, एक एक पवित्र पुस्तकाचे उत्तरा पण तू जेशी But you live according to each and every word of the Holy Bible. हर एक वचन के अनुसार, बाइबल के वचन के अनुसार जियोगे तो तू स्वर्गार आसलोय You will be in heaven. आप स्वर्ग में रहोगे। आम्ही कितें सांगा सुरवाती जायतो लोक हा जेजू आर्गान जा चेची वर आम्ही उलयला न्हू जायतो लोक हांव दाखयता व्हिडिओ जायतो लोक बोळ म्हणटा जेजू 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 कित्याक स्वर्गार जेजू दिसची पडला There are many people over there and they shout out Jesus and Jesus. Why? Because they saw a form of Jesus on the clouds. और पास्टर के पास एक वीडियो है और बहुत सारे लोग यीशु यीशु बोल के चिल्ला रहे हैं और यीशु उनको स्वर्ग में दिखा है। चड डीप डीप हांव शिकोवन दितलो आनी एक शिकोवन येवच्या सेकंड कमिंग ऑफ जीसस तितून हांव शिकयतलो ओके तुमी जाणा जावंक जाय होय ना दुसरे पावटी जेजू येवच्या तेजे वेळार शिकयतलो हालेलुया जेन्नापासून Until and unless जब तक आम्ही वचम्यान जायना we are not in spirit हम आत्मा में नहीं होते हैं आणि आम्ही स्वत पोरगोड करिना and we do not proclaim the truth, और हम सत्य को नहीं प्रचार करते हैं, संसार काबार जाऊच ना the world will not come to an end. संसार नाश नहीं होगा। म्हणच्या सातवी ट्रम्पेट वाजची ना It means the seventh trumpet will not be blown. इसका मतलब सातवीं तुरतुरी नहीं बजेगी। दुखाची खबर न्हय संसार काबार जावंक कुस जाय It is not a thing of this pain. The world has to come to an end. ये दुखी मत हो क्योंकि संसार नाश होना ही है। हो नाही है The world must come to an तुका end येशू मासे आनी काय because Jesus has to come. कित्याक जेजू येवचो आसा। जेजू जाय We need Jesus. हमको यीशु चाहिए, आमकां स्वर्गार रावंक जाय We want to live in heaven. हमें स्वर्ग में रहना है। कितले जाण इफेनाक वचोंक जाय How many want to go in hell? कितने लोग नरक में जाना चाहते हैं, कोणाक नाका No one wants. मगर कोई नहीं चाहता है। कोरने दाखोया So do your work. कार्य दिखाओ। ओके मुखार या Matthew 24 chapter verse 13 and 14 Matthew 24 chapter verse 13 and 14 मत्ती 24 अध्याय 13 और 14 वचन। Matthew chapter 24, verse 13 and 14. हां 13. But he who stands firm to the end will be saved. हां हे तुका आनी म्हाका ऐका एक मिनिट बावड देतो Believers, विश्वासियों, ना हांव बावडती हांव बोर्न अगेन हांव स्वर्गार वयतलो ना 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 यू विल बी इन हेल You- HELL कितें सांगता पोतून तीच लायन वाच म्हाका सेम वर्ड्स But he who stands firm to the end he who stand firm like that God ना शेके वद्दे म्हाका धर्म जाय वद्दो जेजू जाय बेगीच तू हेलान वच बेगीन over there it says, until end you still firm. It is not like half you want religion and half you want Jesus. Then you will end up in hell. और वहां पर ये नहीं देखा आधा यीशु चाहिए आधा ये चाहिए, मगर ऐसे इंसान बहुत जल्दी नरक में चले जाओ। ए जेजू क्रिस्ताचें उतर This is the word of Jesus. और ये यीशु मसीह के वचन जायते है। लोकांना प्रिचिंग येता एक पावटी बोन एगेन जालो तो स्वर्गार पावतलो जाल्यार हें उतर जेजू कित्याक उलयला फम राव गोट राव कित्याक उलयला Many believers or pastors say that once you take the baptism, then you will go in heaven. But why did Jesus speak this word?
और बहुत सारे प्रचारक कहते हैं कि एक बार आप बपतिस्मा लेने से आप स्वर्ग में जाते हैं। नहीं, यीशु मसीह ने कहा है कि आप मजबूती से बने रहो। क्यों कहा है? आम्ही बाप्तिस्म घेतलो आणि म्हाका जाय ते जिवीत जियेलें तूं स्वर्गार वयतलोय. So I took the baptism and you live the life whatever you need. So will you go to heaven? आपने बपतिस्मा लिया और आपको जैसा जीवन चाहिए वैसा जियोगे तो क्या आप स्वर्ग में जाओगे? गोट राव ख्रिस्तासोबे. Stand firm to Christ. मसीह के अंदर मजबूती से बने रहो। गोट राव. Stand firm. मजबूती से बने रहो। या उतोर जेसू ख्रिस्ताचें उतोर. And this word is the word of Jesus Christ. ये वचन यीशु मसीह के वचन है। 14. And this gospel of the kingdom This gospel of the kingdom will be preached will be preached. in the whole world मागीर. as a testimony to Ah. all nations. मागीर. And then the end will come. थोड्याकूच सजमो येयला. जेजू कितें सांगला? ओके कोंकणीन सांगो बाय. आमी कोंकणी मनशान कोंकणीन सांग. माथेवाचे शुभ वर्तमान आयकात. 24 हा. बोल 13 आणि 14. 13 शेवटाक पर्यंत थीर रावतीत तांकां देव थारोवन दितलो. 14 आणि स्वताची साक्षी सगळ्या पोरजांक मेळचे खातीर हे सोर्गींच्या राजाचे शुभ वर्तमान आख्या संवसारांत पोरगोट जातले आणि त्या उपरांत शेवट येतलो. ते उपरांत. And, ते उपरांत. and then, तो उसके बाद में केन्ना? when कब? Gospel. Gospelaचो मिनिंग जावन आसा द टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट. Gospel मिनिंग जेजू ख्रिस्ताची शिकवणी. the gospel, it means the teaching of Jesus Christ. शुभ वर्तमान यानी यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर। कोणाक सांगला हे प्रीच करसून? For whom it is said to preach the gospel, किसको कहा है शुभ वर्तमान धर्मक प्रचार करने नहीं। के लिए? not for the religion. धर्म को नहीं। धर्म प्रीच करिना gospel. The religion does not proclaim the gospel. धर्म शुभ वर्तमान प्रचार नहीं करता है। ओके बीजेपीन काँग्रेसाचे करूंक जायना फामाद करूना. बीजेपी आपल्या हिंदू ऑफिसान काँग्रेसाचो बावटो लावंक जायना. जाता काँग्रेस कुशीन बीजेपी कुशीन देंवचार कुशीन देव कुशीन. गॉस्पल प्रीच करसना शिसांक. It is said to the disciple to proclaim the gospel. और कहा है कि शिष्यों को शुभ वर्तमान प्रचार करने के लिए। हालेलुया. ताका लागून वच. हांव सांगना जेजू म्हणटा वच. And that is what it said. Jesus says, go. इसीलिए यीशु कहता है कि जाओ आणि म्हजे नांवान बाप्तिस्म तांकां दी. बापाचे नांवान पुताचे नांवान पवित्र आत्म्याचे नांवान बाप्तिस्म म्हणजे शीस डिसायपल कर. And give them baptism in the name of Father, Son, and the Holy Spirit, means make them disciples. और दो उनको बपतिस्मा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से और उनको शिष्य करो। कित्याक म्हणल्यार 14 आनी काय बरी. एंड दिस गॉस्पल नॉट दॅट दिस म्हणजे कितें आहा तो. दिस वो not that. Okay, this gospel of the kingdom. Gospel sorgi razodicho. This gospel of the kingdom will be preached, past tense, preached in all the world as a witness to all the nation. Nation gone. Sangat, munis, people. Okay, preach nation. Magi comma, and then the end will सातवा खेळा त्यांना सातवी ट्रम्पेट वाजतली. The gospel will be preached to all nation, and the end will come, and only then the seventh trumpet will be blown. शुभ वर्तमान हर एक राष्ट्र को प्रचार किया जाएगा तब यानी अंत आएगा और सातवीं तुरतुरी बजेगी. कोण जबाबदारी? हांव तू भावार्थी. Who is responsible? You, I, we believers. कौन जिम्मेदार? आप, मैं, विश्वासी. जोर तेम शैतानाक सोडटा ताची जबाबदारी तुम्ही आम्ही. The more time you leave the devil, we are responsible for that. शैतान को ज्यादातर समय छोड़ते हैं कौन? विश्वासी, आप और हम. म्हाका कोलोपाची बरी अजून म्हाका केन्ना हांव तो व्हिडिओ पळयता हांव केन्ना आयकता म्हाका उमेद येता. लुसिफेर कितें सांगला? तूं येयला लुसिफेर, तूं येयला कोल्हापूर म्हाका धांवडोवपाचें कोणाक तूं येयला म्हजे कुडीक पळय. ताका हांवें सांगलें हांव येयला आनी बाव डावन जालो ताणें. हालेलुया. जेजू ख्रिस्ता कारगा ही पदवी तुमच्या भितर आहा. This power is in you. ये सामर्थ्य आपके अंदर है. जेजू ख्रिस्ताच्या नावाची पदवी तुमच्या भितर आहा. The power of the name of Jesus Christ is in you. यीशु मसीह के नाम की सामर्थ आपके अंदर है. जेजू बेश्टोच उलोवंक ना. Jesus did not say it simply. यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा है वच बेश्टोच म्हणोंक ना. He did not say it like this only, that go. जाओ, ऐसे नहीं कहा है. विथ ऑथॉरिटी ही हॅव सेंड यू ऑल.
He has given you authority and sent you all. उसने अधिकार से आपको भेजा है। जायते बावडीचो दिश्टी पडना Many times you cannot see it. बहुत बार वो नहीं दिखता है। कित्याक Why? क्यों? चडसो लोक तुम्ही बावटी फ्लॅशन म्हणजे कुडीचे ओढणे परमनंट छियेता Most of the believers they live according to their fleshly desires. क्योंकि ज्यादातर विश्वासी शरीर के इच्छा के अनुसार जीते हैं। रोमन 8:8 त्या लुगारार वाशें बरयल्या इफ यू लिव अकॉर्डिंग टू योर फ्लॅश यू कॅनॉट प्लीज गॉड तू कुडीचे ओढणे परमणे जेशी तुझ्या बापाक खुशी करूंक जायना Romans chapter 8 verse 8 says that if you live according to your fleshly desires, then you cannot do the will of God. रोमियो 8 अध्याय 8 वचन वहां पर लिखा है कि आप अपने शरीर के अनुसार जियोगे तो आप पिता की खुशी नहीं कर पाओगे। रोमन 8 chapter verse 13 त्या लुगारार वाशें बरयल्या इफ यू लिव अकॉर्डिंग टू योर फ्लॅश यू विल डाय and if you put for your flesh that you will live in a spirit कितें सांगता कुडीचे ओढणे परमणे तू जेशी If you live according to your fleshly desires, आप शरीर के इच्छा के अनुसार जियोगे तू तो मोत्तलोय you shall die. आप मरोगे। पण हे कुडीचे ओढणे तू मारशी But to kill the fleshly desires, मगर इस शरीर की इच्छाओं को मारोगे आणि वतम्या तू जेशी and if you live in spirit, और आत्मा में तू जियोगे, जेथलोय then you will live. आप जियोगे। ताकास लागोन And that is why इसीलिए देवाचे उतर सांगता the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, देव सांगता God says, परमेश्वर कहता है, बी होली बिकॉज आई एम होली Amen. It says, be holy because I am holy. आप पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र बी हूँ। होली बिकॉज आई एम होली It says, be holy because I am holy. आप पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। कितले जाणांक जाय देवचाराक इफेना गुडोंक How many people want to cast out the devil into hell? कितने लोगों को चाहिए कि शैतान को नरक में फेंके। सो आम्ही कितें करूंक जाय So what must we do? तो हमें क्या करना है? आम्ही देवाच्या आत्म्यान भरवया Let us be filled with the Holy Spirit. तो फिर हम परमेश्वर के आत्मा से भरेंगे, देवाचे काम करूया Let us do the work of God. परमेश्वर का काम करेंगे। पण कितें घडटले And then what will happen? तब क्या होगा? सातवी ट्रम्पेट वाजतली The seventh trumpet will be blown. सातवीं तुरतुरी बजेगी, शैतानाचे काम खबर And the work of the devil is destroyed. What? शैतान का काम नाश। 1 Peter 1 chapter was 14 to 16 1 Peter 1 chapter was 14 to 16 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16. Ah. 14. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. 15. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. 16. For it is written, be holy because I am holy. Amen. Praise the Lord. कोंकणी वाच सिस्टर पेद्रूचे पयलें पत्र आवेस्वर 1 वोल 14 ते 14 देवाची कालती पालोक भुरगीं जायात आनी तुमी सोत वळखोन आसल्यात तेन्ना तेन्ना तुम्ही- त्यांनी स्वत वळखोन असले तेन्ना तुम्ही- Past tense. It जब is, आप it is in the past when you were not knowing the truth. जब आप यानी सत्य को नहीं जानते थे, वो तुमी तुमच्या वोंदवण्या प्रमाणे वंडोण्यो लास्ट ऑफ योर फ्लॅश वंड्यो कुडीच्यो The fleshly desires. अपने शरीर के अनुसार आदि आम्ही जियेले In the past you lived it. हमने पिछला जीवन जिए, तशें आतां जियेनाका In the same way do not live your life now. वैसे अभी मत जियो। तशें आतां करूं नाकात करू नाका परतेंच सगळे तुमचे चालींत पवित्र जायात पवित्र जावयात कित्याक कित्याक जाणें तुमकां आपयल्यान तो पवित्र आमेन कोणे आपयल्यान Who has called you? किसने बुलाया है? हांवें तुमकां आपोवंक ना Pastor has not called you. पास्टर ने नहीं बुलाया है, नाजाचे क्रिस्तान तुमकां आपयल्या आमेन But Lord Jesus Christ has called you. नासरी यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। हालेलुया जालें अशेंच पवित्र पुस्तक सांगता हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात जेजू क्रिस्त साकारगा Hallelujah. मन बदलात Repent मन बदलो जिवीत जियात and live your life. और जीवन जियो। जे दिसाक The day when जिस दिन तुवें जेजू क्रिस्तावर आयकोलें you have heard about Jesus Christ आपने यीशु मसीह के बारे में सुना आनी सत मानून घेतलें and you believed it, और विश्वास करके लिया, त्याच दिसाक that day उसी दिन स्वर्गीचे बापान Heavenly Father स्वर्गीय पिता ने तुजेर पवित्र आत्मा धाडलो has sent Holy Spirit upon you. आपके ऊपर पवित्र आत्मा भेज दिया। एफेसियन 1 चॅप्टर वर्स 13 त्या लुगारार दोन कामां
आम्ही करून जाय फायनल काम देव करता. Ephesians chapter 1 verse 13, over there 2 things you must do and the next thing God does it. एफिसियंस पहला अध्याय 13 वचन, 2 काम हमें करना है, तीसरा काम परमेश्वर करेगा. जेजूवर आयकोंक जाय. You must listen about Jesus. यीशु मसीह के बारे में सुनना है. आयकोन सोडूंक जायना. आयकोन ताका गोड धरूंक जाय. After listening you must not leave it. After listening you must abide by it. सुनने के बाद नहीं छोड़ना है, सुनने के बाद उसे घट पकड़ना है. तुझे भितर येता जिवीत. And then the life comes in you. और आपके अंदर आता है जीवन. आणि हे जिवीत तुका सासके जिवीत स्वर्गार पावयता. And this life leads you to everlasting life, that is heaven. और ये जीवन आपको अनंत काल के जीवन में यानी स्वर्ग में पहुंचाता हे है. जिवीत हे संसार तुका देव करता. The same life makes you God of the world. और यही जीवन आपको इस संसार में प्रभु यानी परमेश्वर बनाता है. What sister? Ephesians 1 chapter verse 13. एफेसकारांक पावलूचें पोत्र आवेसवर 1 वोल 13. क्रिस्ताच्या एकवटांत आतां तुमी भितर सरल्यांत, कित्याक तुमी विदेशांनी स्वताचो संदेश आयकला. सोडवणेचें शुभ वर्तमान भावार्थ धरून मानून घेतला. भावात धरून तुम्ही मानून घेतला जेजू ख्रिस्ता वयर. You have kept faith and have hold on to the word of Jesus. यीशु मसीह पे विश्वास रख के परमेश्वर के वचन को घट पकड़ा है. मागीर तुमी आपली मून दाखोवच्याक देवान तुमचेर शिक्को मारला. बासायलोलो पवित्र आत्मो ताणे तुमचेर धाडून दिला. सहजमो घेयला. आ You'll understand? पवित्र आत्मा आमकां दिला. The Holy Spirit is given to us. पवित्र आत्मा हमें दिया है. एका दिसाक हांवें सांगलें तुमकां पोत्तून सांगता. एका दिसाक म्हाका हिंदू घरान प्रे करूंक आपयलो. हिंदू घरान. One fine day, pastor was called to pray in a Hindu house. एक दिन पास्टर को हिंदू के घर में प्रार्थना के लिए ले गए. व्हडलो बंगलो तो पूण तो रावतालो एक ताचो रूम धाकटोसो आसलो. It was a great bungalow, but he was living in a small room. बंगला तो बहुत बड़ा था मगर वो छोटे से रूम में रहता था. बंगल्याक भितर रूम धाकटो आसलो. It was a small room in the bungalow. यानी बंगले के अंदर ही छोटा सा रूम था. ताजें बेड आसलें अशें. There was a bed. उसका बिस्तर था. एक कदेल आसलें त्या लुगारार. There was one chair. वहाँ एक कुर्सी थी. आनी एक काबड आसलें ह्या लुगारार. And there was a cupboard. और वहाँ पर एक कबर्ड था. इल्लीशी वे भितर येवंक. And there was a little way to come in the room. और वो छोटा सा ही रास्ता था अंदर. त्या लुगारार एक रोमन कॅथलिकाची एक वस्तोरी येताली. सदांच ताका देवाचे वयर सांगोंक. And over there, a Roman Catholic woman used to come to tell him about God. और वहाँ पर एक रोमन कैथलिक की महिला आती थी परमेश्वर का वचन उसे बताने. देवाक वळखता तो मनीस फकत बायबलान जे येता पळय तोच वळखता देव कोण पळय तो. The one who knows God lives according to all the word of the Bible. और परमेश्वर को वही जानता है जो बाइबल के वचन के अनुसार जीता है वो. ते दालेक हांव सुटका दिवचे हांव शिकवण दितालो. Pastor was giving a teaching to that man to set him free. और पास्टर उस इंसान को छुटकारे के बारे में बता रहे थे. ती वस्तोरी मोठी आसली म्हज्या मुखार धर्माची वस्तोरी. And that religious woman, she was really fat and she was before a pastor. और वो धर्म की महिला मोटी थी पास्टर के सामने. आनी अशें म्हणाय बडा 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 कितें उलयताय वा बडा 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 बडा. आमी म्हणाय तूं कितें उलयता. पवित्र आत्म्याची भाशा उलयता. पवित्र आत्मा उलयता. ओगी रावना म्हाका डिस्टर्ब जाता. बडा 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 उलयता. पवित्र आत्मा धर्माच्या मनशाक पवित्र आत्मा येता. जाल्यार जेजू फटकेरो जालो. देव फटकेरो जालो. She started saying some words and then our pastor asked, what are you saying? She started saying, I'm saying the words of the Holy Spirit. Now our pastor is saying, a religious person, can the Holy Spirit come upon her? और वो अन्य भाषा में बोल रही थी और पास्टर ने पूछा कि कौन से भाषा यानी क्या बात करे. मैं वो कहने की पवित्र आत्मा की भाषा में. पास्टर पूछ रहे हैं कि क्या धर्म के जो धर्म में रहते हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता है. तितल्यान आनीक जायते उलयला. जेजू फटकेरो जाता. So if it comes and Jesus is a liar. तो फिर यीशु मसीह झूठे हो गए. पवित्र आत्मा शिष्याचेर धाडला. The Holy Spirit is sent upon disciples. पवित्र आत्मा शिष्यों के ऊपर भेजा है. हालेलुया. उलोवंक म्हाका आडकुळ करूंक लागली. बडा 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 उलयता कितें उलयता तीच जाणा. She started creating a disturbance for pastor to speak to him. और वो महिला पास्टर को रुकावट बनने लगी. क्या कह रही थी उसी को मालूम. तो देवाचो आत्मा म्हाका डिस्टर्ब करतालो. देवाचें उत्तर दिवंक दिनासलो. It was the spirit of the devil which was disturbing our pastor to while he was proclaiming the word of God. और वो शैतान का आत्मा हमारे पास्टर को रुकावट हो रहा था क्योंकि परमेश्वर का वचन न देने के लिए. सो वसो आसलो ताका सोडलो ह्या मनशाक सोडलो वसो गेलो. इन द नेम ऑफ जीसस का बी हील. बडा बडा हालेलुया. So pastor left that person, turned around and prayed over her and she just fell down. और जिस इंसान को शुभ यानी पास्टर प्रचार कर रहे थे उसको छोड़ दिया और घूमकर उस महिला के लिए प्रार्थना किया और वो नीचे गिर गई. ऐका. Listen. सुनो.
तो जेसु ख्रिस्ताची शिकवण तू ऐकता when you listen to the teaching of Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह की शिक्षा सुनते हैं, वो पहिलो भाग. this is the first thing. ये पहला भाग है. दुसरा भाग तू मानून घेता गोड दोत्ता. The second thing, you abide by it. दूसरा भाग उसको आप अपना लेते हैं. वो दुसरो भाग. This is the second thing. ये दूसरा भाग. या दुसरे भाग फिनिश करता तिसरो भाग देव करता आपलो पवित्र आत्मा तुझेर धाडटा. The second thing is fulfilled by God, that He sent His Holy Spirit upon you. और इस दूसरे भाग को पूरा करता है परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा भेज. वोच आत्मा. The same Spirit. और यही आत्मा देवाच्या उतरा प्रमाणे वो उतरा भितर वो उतर जाऊन आमच्या मध्ये हा. According to the word of God, are turning into word is within us. और वो परमेश्वर का वचन बन के वचन ही बन के हमारे बीच में है. तुझ्यानी सिच्युएशन सरकमस्टन्स चेंज करून जाता जेसु ख्रिस्ताच्या नावान. You can change the situation or the circumstances in the name of Jesus. आप परिस्थितियों को बदल सकते हैं. हालेलुया. हालेलुया. जेसु ख्रिस्ता करगा. कित्याक? Why? क्यों? वाचूया मुखार या. ओके निमाणे वाचूया आणि काबर करूया. गॉस्पेल जॉन 10 काढा 34 and 35. Gospel John 10 chapter verse 34 and 35 वाचूया. Gospel John chapter 10 verse 34 and 35. 34. Jesus answered them, is it not written in your law, I have said you are gods? Amen. 35. If he called them gods, Ah. to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. सजमग हेला. मार दो. Believers, विश्वासियों, सजमग हेला. did you understand? आई बात समझ में. आवे तुमका देव म्हणून ना पण जेसु ख्रिस्तान तुमका देव म्हटल्यात. Pastor did not call you all God, but Jesus Christ has called you all. पास्टर ने आपको परमेश्वर नहीं कहा है, यीशु मसीह ने ही आपको परमेश्वर कहा है. बोतून वाचूया. बरे बरे होतं न्हू हे. संसारचो लोक आमकां कसरो म्हूण सजमता पूण आमी तांच्या व्हडते उडगासुरात. The people of the world think that we are good for nothing, but we are made precious before them. संसार के लोग हमें अयोग्य समझते हैं, मगर हम उनसे भी बढ़कर है. हांव खरें उलयतां. Pastor is speaking the truth. पास्टर सत्य ही कह रहे हैं. तांचे लागीं करोड करोड रुपीस आसोय. एक दुयेंस जावं एड्स ओ कॅन्सर कितें जायत कवर जातले पयशे. थोडी आसून मरतलो पूण आमी तांकां जीव दिवंक जाता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. वोटी क्रिस्त आमच्या लागीं आहा. How rich a person may be, all of his riches may perish by through any sickness like AIDS or cancer, but we can give them life in the name of Jesus. पिडेन तूं मरतलोय. You will die in the sickness. आप बीमारी में भी मर जाओगे. पयशे कवर जातले. All your money will be destroyed. पैसे नाश हो जाएंगे. माय ग्रेस मिनिस्टर तू. So then, are you a rich man now? तो क्या आप धनी इंसान हो गए? आमच्या लागीं कांय ना पूण आमच्या लागीं देवाचो आत्मा आमी ग्रेस. We have nothing, but we have the Spirit of God, and we are rich. और हमारे पास कुछ नहीं मगर परमेश्वर का आत्मा है और हम धनी हैं. आतां पळोवंक ना ते भयणीक कशें देवान ब्लेस केला तो. आ दोरी घालून आमी उडयले. देवाची पदवी दी. देवाची पदवी दी. कोंगानी वाच. काय बरें उतर. मुरगटा. खुशाल जावा. जोवाचे शुभ वर्तमान अविस्वर 10 बोल 30 आणि 4 आणि 30 आणि 5. जेजून तांकां जाप दिली. जेजून तांकां जाप दिली. Jesus answered them, और यीशु ने उनको जवाब दिया, तुम्ही देव म्हूण हांवें सांगलां. आमेन. अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयल्लें आसा की ना? शास्त्र म्हळ्यार स्क्रिप्चर उतर. उतरां भितर बरयल्लें हा. is it not written in the Bible? क्या वो बाइबल के अंदर लिखा नहीं है? म्हणटोच जांकां देवाचें उतर पावलां पावला. तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा आमेन. आनी पवित्र पुस्तक मोडून वचो. मोडून वचो. आमकां देवाचें उतर पावला. The word has come to us. हमें परमेश्वर का वचन पहुंचा है. देवाचें उतर जावं नाजर जेजू ख्रिस्त. And the word of God is Lord Jesus Christ. और परमेश्वर का वचन है नासरी यीशु मसीह. तो बायबल अन्ना पुढे आमच्या भितर हा. He is not in the Bible, but He is in us. वो हम बाइबल में नहीं मगर हमारे अंदर है. हालेलुया. जेजू ख्रिस्ता कारका. जेजू ख्रिस्ता कारका. आता सांगात म्हाका 7वी ट्रम्पेट वाजोवन कोणाच्या हातान आहा? अब बोलो पास्टर को 7वीं तुरतुरी बजाने की. भावार्थ्याच्या हातान आहा. It is in the hands of believers. वो विश्वासियों के हाथ में है. कुशल आहात? Are you all happy? सब कुछ है. कुशल असं कुछ जाय. You must be.
कित्याक देवाचें उत्तर तें